Hi, good evening, everybody. Hello, good evening. How's everybody doing this evening? Nice to see you all again. Yes, hello, Ninad, Prajyot, Nishad, how are you? Hello, Ramesh, good evening. Good evening, Beena, Ujjwala. Hello, Amol, Ramesh. Awesome, very good. So nice to see each one of you. Pandurang, Devendra, Kamlesh ji. Hello, Sonika ji. Good evening, everybody. Warm welcome to everybody to day 8. Hello, Sharad ji, Rajiv. Hello, Santosh Kumar. So happy people joining in from all over India at least, and some of you probably outside of India. Hello, Kiran. Hi, Dhaval. Thank you. Listening to it. That's nice. That's a very nice compliment. Thank you so much. Okay, who else is there? Hello, Jeffin. Good evening. Hello, Mansi. Sudhir ji, hello. Hello, Mansi. Ramesh ji. So everybody started waving their hands. Hi, Amit. Hello, Manish. Ashish, hi. Good evening, Beena. Hi, Dhaval. Very nice to see all of you once again. It's a pleasure to have all of you once again on board. It's day 8 today, and we're going to discuss some very exciting things today. Hello, Thankanji, Gajanan. Okay, if you can let me know the location from where you're calling or where you're joining in from, that'll be nice to know where all you are calling from. Hello, Shweta. I know people are calling in from different places. Hi, Shaista. Hello. We just wait for another 2 minutes and then we'll begin. Thank you so much once again, all of you, for joining in. Sincere gratitude. Hello, Geeta. Nice to see a lot of familiar places, familiar faces. Yes, Thankanji is calling from Oman. Very nice, Thankanji. Thank you so much for joining in. Pandurangji is calling from Vasai, calling in from Vasai. Bhushanji is from Vadodara. Wow. Padma is from Chennai. Ujjwala is from Vasai. Sharadji is from Goregaon. Mohini is from Thane. Ashish is from Delhi. Good. Hello, Lalitji. Sanjeev Kumar is from Mumbai. Hey, Bob. How are you? Bob is calling in from the US. Thank you, Bob, for calling in. Hi, Aditi. Okay, Deepak ji is from far away from Pune. Lalit ji is calling from Vadodara. Great, great, great. Thank you so much. Thank you, thank you. Hi, Rajni. Oh, there's a friend from Germany also. Wow. Okay. Thank you so much.
This is Prabjot from Odisha. Awesome, awesome, awesome. Very nice, very nice. Thank you so much, guys. Okay, so we're going to begin with a few questions. I hope everybody is feeling great and that you're able to feel much better in spite of the situation outside. आशा है कि आप सबके पास कुछ टूल्स है, टेक्निक्स है, कुछ स्ट्रेटजीज है अभी जिससे कि आप अपने जीवन को और अच्छी तरह से जी सकते हो, मन को शांत रख सकते हो, क्योंकि इसी को तो एक ही को तो संभालना है बेसिकली. इट्स ऑल अबाउट द माइंड. या इफ यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ योर माइंड यू कैन बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन. या so that's very nice, very nice. I'm happy to see all of you once again. Your being here itself proves that all of you are feeling good about being part of this session, so that's very nice. So I'll start with a few questions that generally when I do my seminars and workshops, these are some questions that I always start with. That what makes some people very happy and the others are not. You see that there are so many people who have everything in their life and yet they are not happy. And on the other hand, you will find that some people don't have much in their life but they're still happy. So what is the secret of happiness? What makes some people more successful than others? You will see that there are similar people. दोनों के पास सेम डिग्री है, सेम क्वालिफिकेशन है, हो सकता है कि सेम परिवार में से है, सेम तरह का अपब्रिंगिंग है. You see that one brother becomes very successful, the other is not able to succeed. Why does this happen? Okay. Why is it that some people are always fit and healthy and on the other hand there is most people having some health problem or the other? Headache, backache, stomach ache, this ache, that ache, some problem or the other always going on. Why does that happen? Why is it that some people in spite of the market situation are able to thrive? That means they're able to do well in their business, they're able to achieve their sales targets in spite of the market situations. And you will see that 80% of the people are never able to achieve their targets. When the market goes down or when the market is slow, you see that 80% people are not able to perform, whereas 20% people are able to perform in spite of the market situation. Why does this happen? Yeah. Why is it that some people are always so-called lucky? In fact, we call them lucky. Okay, when we look at them, we say, wow, तेरे लाइफ में तो सब कुछ एकदम सेट है, हमेशा सब कुछ ठीक ही चलता है, तू तो बड़ा लकी है. And on the other hand, you will find that there are many people who call themselves unlucky. Yeah, वो हमेशा अपने आप को अनलक्की कहते रहते हैं, कहते हैं मेरी कुंडली खराब है, मेरा नसीब ही खराब है, मेरी किस्मत खराब है. तो is there something called luck? Is there something called destiny? And if it is so, then who controls our luck? Who controls our destiny? कौन उसको कंट्रोल करता है? Okay, so ये सारे questions के answers एक ही है. If I ask you all these answers that what makes some people more successful than others, you will find that most people will say hard work, determination, education, sincerity, commitment to work, having goals, having passion. ये सारे answers बहुत common है. But in spite of that, you will see that there are many people who are hard working, who are sincere, who are dedicated, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, पैशन भी होता है उनको काम में, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कामयाब, जितना लेवल की कामयाबी उनको मिलनी चाहिए नहीं मिलती है. They do get success, but at some level they come and they get stuck. They're not able to go to the next level. There are very few people who rise to the top. So what is the real secret of these highly successful people? And from my 20 years of research, I've discovered that there are two things that these highly successful people have more than the other people. देखो ये सारी qualities तो चाहिए ही, being dedicated, focused, hardworking, sincerity, all that is definitely necessary. But there are two additional reasons why people become highly successful. The first reason I've discovered is that they've learned how to control their minds. They've learned how to use the power of their minds. See, our mind has unlimited potential, unlimited power. The only limitation the mind has is the limitation that you give to the mind. अगर हम माइंड को बोल दे कि बस यही मैं कर सकता हूँ, तो फिर that's it. माइंड उससे ज़्यादा कर नहीं पाएगा. So people who have understood their mind and people who have learned how to use their minds are the ones who become very, very successful. क्योंकि वो लोग कोई भी परिस्थिति हो अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं,
और अपने माइंड की अनलिमिटेड शक्ति को वो इस्तेमाल कर पाते हैं. दे हैव लर्न हाउ टू अनलीश द हाईएस्ट पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट विद इन देम. सो दैट इज द फर्स्ट सीक्रेट. जितने भी कामयाब लोगों से मैं मिला हूँ, आई कीप स्टडिंग हाईली सक्सेसफुल पीपल एंड व्हेन आई ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड आई मीट दीज पीपल, तो मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग इतने कामयाब बने कैसे. तो सबसे पहली क्वालिटी जो मैं देखता हूँ वो है कि उन्होंने अपने माइंड को अच्छी तरह से यूज़ करना सीखा है. तो फिर दूसरी चीज़ मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये उन्होंने कहाँ से सीखा है, ये माइंड के बारे में कहाँ से सीखा है. तो जब मैं पता करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि आइदर दे हैव रेड इट फ्रॉम सम बुक, या तो किसी किताब से उनको नॉलेज मिला, या तो उनके कोई कोच या गुरु थे, और या तो कुछ लोग ऐसे होते जो अपने माइंड को नेचुरली अच्छी तरह से यूज़ करते हैं. But all of them have one quality and they've learned how to use their mind effectively. So that's the first big secret of success, okay? The second secret is I've understood that these people understand the principles of success. कामयाबी के कुछ नियम होते हैं. There are certain principles. जैसे कुदरत के भी कुछ नियम होते हैं, right? कुदरत के बहुत सारे नियम, हमने कुछ नियमों के बारे में डिस्कस भी किया. इसी तरह कामयाबी के भी कुछ नियम होते हैं. अगर हम कामयाबी के नियमों को फॉलो करें तो ना ही हम कामयाब होंगे लेकिन साथ में खुश भी होंगे. सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल. सक्सेसफुल पीपल हु आर सक्सेसफुल एंड अनहैप्पी, एंड सक्सेसफुल एंड हैप्पी. विच इज द वन विच यू वुड लाइक टू बिकम? वुड यू लाइक टू बिकम सक्सेसफुल एंड अनहैप्पी, और वुड यू लाइक टू बिकम सक्सेसफुल एंड हैप्पी? ऑब्वियसली एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी ऑल्सो. तो अगर हमें कामयाब भी होना है और खुश भी होना है तो हमें कुछ नियमों को फॉलो करना ज़रूरी है, और इन नियमों को हम कहते हैं द सक्सेस प्रिंसिपल्स. ये प्रिंसिपल्स मैंने अपने गुरु जैक कैनफील्ड से सीखा. उन्होंने एक किताब, जैसे मैंने आपको उस दिन बताई थी, द सक्सेस प्रिंसिपल्स. इन दैट बुक देर आर 67 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस. ओके, उन प्रिंसिपल्स को अगर हम अच्छे ढंग से फॉलो करें तो वी कैन अचीव एनीथिंग दैट वी विश टू अचीव इन आवर लाइफ. वी कैन क्रिएट द लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स, and also without compromising on health, happiness, success, relationships. वो सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना हम वो चीज़ों को अचीव कर सकते हैं. तो आज से लेके 14 अप्रैल तक जितने दिन हम साथ में निकालने वाले हैं, आई एम गोइंग टू कवर वेरियस टिप्स, ओके, एंड स्ट्रैटेजीज एंड सक्सेस प्रिंसिपल्स, ताकि ये प्रिंसिपल्स को अगर हम अपने लाइफ में फॉलो करें तो हम कामयाब भी हो सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू कवर वेरियस लिटिल टिप्स, ओके. In between, I was sharing these tips on Facebook also. I have almost about 150 to 160 tips, little tips, जो हम रोज़ के दुनिया में अगर फॉलो करें तो हम कामयाब भी हो सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं. ओके, तो आज का टिप क्या है? आज का टिप है टू ऑलवेज लुक फॉर गुडनेस इन एवरी सिचुएशन. लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उसमें कोई ना कोई चीज़ हमें अच्छी ढूंढनी है. दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटीज़ ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, कि उनके लाइफ में कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी तकलीफ़ें आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, बट दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग गुड इन दैट सिचुएशन. तो दैट इज़ अ वे, यू नो, दैट्स अ पर्सपेक्टिव दैट these people have. They always look for something good in every situation. तो जैसे अभी हमारा जो कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन जो है चल रहा है, इस सिचुएशन में भी हमें कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढना है कि इस सिचुएशन में अच्छा क्या है. तो मेरे लिए तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि अच्छी क्या हुई. तो एक तो इस सिचुएशन में मैं जनरली ट्रैवल करते रहता हूँ, बहुत ही ट्रैवल करता हूँ. तो अभी मुझे टाइम मिला कि मैं मेरे फैमिली के साथ टाइम निकालूँ. आई कैन स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम विद देम. मेरी बुक जो कितने समय से मैं लिख नहीं पाया हूँ उसको मैं लिख रहा हूँ. मैं डाइट पे जा नहीं पा रहा था वज़न कम करने के लिए, तो मैं डाइट पे गया हूँ. तो ऑलमोस्ट मेरे 2-3 किलो वज़न ऑलरेडी कम हो गया. इस तरह के फेसबुक लाइव सेशंस में करना चाहता था, मैं कभी नहीं कर पा रहा था, तो अभी मैं कर पा रहा हूँ. एवरी सिंगल डे फॉर दिस विथ माई स्केड्यूल्स इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट मैं ये कर पा रहा हूँ. तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन वेरी गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड. एंड आई एम लॉन्चिंग माई माइंड पावर ऑनलाइन प्रोग्राम, जो कितने सालों से मैं सोच रहा था उसको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन कर रहा है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा था. तो अभी वो भी होने वाला है. जैसे अप्रैल 9 to 12th, 9th अप्रैल से वो प्रोग्राम शुरू हो रहा है. This is the first time I am doing this. So this is how I found that there is so much of goodness even in this situation. Okay, I would like to ask the audience today that what is something that you find good in this current situation?
Chale, let me see what all you write. What is the goodness that you see in the current situation? हर इंसान की देखने का नज़रिया अलग होता है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या देखना चाहते हो. Thanks to Corona that we got to listen to you daily at 9:30. Thanks, Neeraj. Okay, opportunity to learn something new, Prashant is saying. Okay. Neeraj is saying daily success pills. Okay, very good. What else? What other good things do you see in the current situation? What are the other good things that you see? Dev Chandan says, I got more time to prepare for my exams. Wow, Dev is in the 12th standard. Okay, Sanjeev ji is saying, time to be with myself. So important. Excellent. Jisan is saying, spending time on self-development. Very good. Nishad is saying, I'm very grateful for every small thing in my life. I've learned to be more grateful. Amol ji says, Sanjeev ji says, quality time with my family. Rukhsana says, self-improvement. Sri Lakshmi says, no hotel food. Wow. Vaibhav says, peace of mind. Okay. Mansi says, get time to do meditation. Sonika ji says, I'm sorry, the comments are moving so quickly that I'm not able to read all the comments. Sake says, giving time to my parents. Very good. Giving time to your parents is so important. Ankit says, getting personal time. Okay. Mital says, good family time. Excellent. Somebody says, exercising. Wow. Amolji says, learning how to appreciate people. Right. Sanjeev ji says, working on the inner self. Okay. We will realize that we are just, somebody is saying that we are realizing that हमारी actual शक्ति क्या है. Actually कुदरत के सामने कुछ भी नहीं है. Lalit says, reading books. Okay. Amit ji says, somebody says cooking, learning how to cook, learning how to cook. Rupesh ji says that I'm learning how to, spend more time in meditation. Shweta says sharpening my axe. Very good. Yeah, good time with my family. Rukshana says reading good books, writing blogs. Amit says writing blogs. Ramesh ji says connecting more with nature. Okay, brilliant. Opportunity to learn new things, exercising, reading, deep planning for the future. Very good, planning for the future. Simone says it helps me to keep myself busy. Awesome. Manishji says being more grateful. Bhagyashri says got to know the pain of housewives. That's a big realization. Wow, actually housewives are doing 7x24 roles. And when we actually work at home, we really come to know what the homemakers are doing. They're actually on the hardest job on the planet, actually, okay? So Rajni says, how to love more people, okay? Geeta says, family time and working on myself. Sanjeev ji says, entered the kitchen for the first time. Very nice. Yogendra says, ozone layer is healing. Okay, wow. See. If you look at the number of things people are realizing, we can see that, how beautiful every situation in life can be. Remember, God has a plan for us, a bigger plan for us, which we are not able to understand. परमात्मा के माइंड में हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है जो हमारे लिए हमेशा अच्छा होता है. God always loves all his children. So कोई सवाल ही नहीं उठता है कि इस सिचुएशन में कुछ बुरा होना है. इस सिचुएशन में से भी कुछ ना कुछ अच्छा निकलना ही निकलना है, सो दैट इज़ वाई वी मस्ट ऑलवेज लुक फॉर गुडनेस. और अगर हम अच्छी तरह चीज़ों की तरफ देखें तो हमारे लाइफ में गुडनेस अच्छा होगा. जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि वट एवर यू फोकस ऑन विल इंक्रीज इन योर लाइफ. तो अगर हम गुडनेस पे फोकस करें तो हम अपने जीवन में और गुडनेस ला सकते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टिंग समथिंग, ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी. हर परिस्थिति में हम हमेशा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, हमेशा अच्छा होगा. तो व्हेन वी डू दिस, लाइफ इज ऑलवेज ब्यूटिफुल बिकॉज वी कैन ऑलवेज लर्न समथिंग आउट ऑफ एवरी सिचुएशन. Naresh says me time. Sanjeev Prabhu says bigger plan for my life is unfolding to me in these days. Amazing, Sanjeev ji. You've already kept a target of 300 crores for your team now. And I know you can do it and your team can definitely do it. Shweta says master plan.
Very good, very good. I'm very happy to hear all the responses, and that is why this is one of the principles of success. Remember that when people are in trouble, successful people are always looking for opportunities, and unsuccessful people are looking for problems. वो हमेशा बोलते रहते हैं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है. And the people who are successful and happy are the people who are always looking what's the opportunity, what's the opportunity. तो जब वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जो प्रॉब्लम को ढूंढते हैं उनको तो इनफ प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं. प्रॉब्लम्स की वैसे भी कहाँ कमी है, राइट? So we can definitely look for goodness in every situation. So somebody type this success principle out, that the first principle of success that we're learning today is looking for goodness in every situation of life. This is developing an attitude of keeping an eye for something positive in every situation. ये एटीट्यूड अगर होगा तो हम इंसानों को जब देखते हैं तो तभी भी हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, क्योंकि हर इंसान में भी हम कोई ना कोई अच्छाई ढूंढेंगे, और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ बुरा होता है. लेकिन अगर हम इंसान की तरफ देखते समय उसकी अच्छाइयों को देखें तो उस इंसान में और अच्छाइयाँ बढ़ेगी. आप देखेंगे कि एक्चुअली उनके अंदर काफ़ी सारी अच्छाई चीज़ें हैं. लेकिन अगर इंसान की नेगेटिव चीज़ों को देखें, दिस इज जनरली अवर हैबिट, दैट वी ऑलवेज लुक फॉर प्रॉब्लम्स इन अ पर्सन. वी आर नॉट लुकिंग फॉर द गुडनेस इन द पर्सन. ओके, तो जैसे यू कैन लुक फॉर गुडनेस इन सिचुएशंस, यू कैन ऑल्सो लुक फॉर गुडनेस इन पीपल. और जब किसी भी इंसान में हम अच्छाई ढूंढते हैं तो उस अच्छाइयों को हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, उसको कोच कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, और उसकी जो क्षमता है, पोटेंशियल को हम उसको बढ़ा सकते हैं. अगर हम उसकी नेगेटिव चीज़ों को देखें, जो वो गलत करता है उसको देखें, तो हम अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स वी एक्चुअली सप्रेस देयर पोटेंशियल. या सो लुकिंग फॉर गुडनेस इन एवरी सिचुएशन इज वन ऑफ द हाइएस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस. So how much time do we have? We have another 10 minutes. So I'm going to cover one more principle. Okay, because we have so many principles, so we can cover at least one or two principles every day. When I was saying I'm having a great team pursuing internal development through deep meditation and yoga, this is an extended quiet time, bonding time with family, special benefits, feeling very grateful for this unexpected learnings that you're getting every day. Thank you so much, Vinaya. Thank you so much. Okay, so yes, awesome. Now I'm going to cover one more success principle today. Yeah, Amit is saying, just thought of our son to clean, taught our son to clean utensils, goodness principle extracted. Awesome. Very good. So there's so much of learning that we're doing, right, in these few days. Yeah, excellent, guys, excellent. So the second principle of success that I'm going to share with you today is a principle which is so powerful that Jack Canfield ने actually उसके ऊपर एक पूरी बुक ही लिख दी है. उस बुक का नाम है अल्लादीन फैक्टर. और अल्लादीन फैक्टर, the most important principle of ask. Okay, so what is this principle stating? ये principle क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, अगर आप किसी चीज़ में कामयाब होना चाहते हो, तो आप ऐसे किसी इंसान को ढूंढो जो ऑलरेडी कामयाब है, और उसके साथ में एक मीटिंग रख के उसको पूछो, भाई तूने कैसे किया. ओके, इतना सिंपल प्रिंसिपल है, लेकिन फिर भी लोग पूछते नहीं है. या सी, इफ यू वांट टू बिकम लेट्स से यू वांट टू बिकम अ डांसर, who should you go to? Should you go to somebody who's struggling in dance, or should you go to somebody who's really good in dance? Obviously, you should go to somebody who's already succeeded in dance. If you want to become a doctor, go to somebody who's already a successful doctor and find out how did you do it. अगर आप एक successful salesperson बनना चाहते हो, तो go to the highest performing salesperson in your company and ask the person, how did you do it? अब ये प्रिंसिपल अगर उसने बता दिया तो अपना काम हो गया, अगर नहीं बताया तो हमारा तो कुछ बिगड़ा तो है नहीं. सो देन व्हाई डोंट पीपल आस्क? ऐसा क्यों है कि लोग पूछते ही नहीं है? तो कोई बता सकता है व्हाई डोंट पीपल आस्क? अगर ये प्रिंसिपल इतना आसान है कि हम कामयाब लोगों से पूछ के अपने आप को भी सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो लोग पूछते क्यों नहीं है? व्हाट आर द रीजंस? ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्यू आंसर्स. Why don't people ask? It is such a simple thing.
Jack has written a full book, and I would suggest this book to all of you, is to read this book called Aladdin Factor, where he teaches you how to ask. So Nishad says, fear of being told no, it's not possible for you. That means fear of failure, ego है मैं क्यों पूछूं, fear of rejection, वो मुझे ना बोल देगा तो. Yeah, Reena also says fear of scared of rejection, fear of failure, मैं पूछूंगा और मुझे ना बोलेगा, कचरा कर देगा तो मेरा. I thought the same thing. Yeah, okay, very good. Because they have hesitation. Yes, why is the hesitation? Because they feel scared. कहीं ना कहीं fear है. Sushmita is saying shyness के वजह से पूछते नहीं है. लेकिन एक्चुअली ये सारी चीज़ों का बॉटम लाइन है कि कहीं ना कहीं वो डरते हैं. ओके, हाँ, मानसी सेज दैट आई हैव एन एक्सपीरियंस दैट पीपल डोंट शेयर. वो शेयर नहीं करेगा तो मेरा कचरा कर देगा तो. फेयर ऑफ बीइंग इंसल्टेड. दीपांशु सेज फेयर ऑफ बीइंग इंसल्टेड बिकॉज सम पीपल फील दैट आई नो एवरीथिंग, मैं दूसरों को क्यों पूछूं. नीलेश जी सेज रिजेक्शन, फीलिंग रिजेक्टेड. मनीष मिश्रा सेज ईगो, हेजिटेशन, फियर टू बिकम फूलिश. दीपक जी बोलते हैं कि कोई मुझे सोचेगा कि इस उल्लू को तो कुछ पता ही नहीं है. नो ट्रस्ट और फेथ ऑन द पर्सन के वो बताएगा. ओके, जेलसी, नेगेटिव, नॉट एबल टू डेयर टू आस्क समबडी. या आस्किंग इज एक्सेप्टिंग दैट आई डोंट नो मच. Low self-esteem and image. Asking requires dare, having dare. What will the other person think? Fear of failure. Maybe the other person, why should the other person share his secrets? Wow, amazing reasons. And this is the main reason why most people don't ask. But now let me tell you कि rejection is a myth. एक्चुअली रिजेक्शन जो हम कहते हैं किसी ने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे ना बोला, एक्चुअली इट इज़ अ मिथ. मतलब उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं. अगर हम किसी को पूछते हैं कि भाई आपने ये कैसे किया, जैसे आप एक सेल्स पर्सन हो और आप किसी हाईली सक्सेसफुल इंसान को पूछते हो कि आप सेल्स में कैसे सक्सेसफुल हुए, तो समझो उसने बता दिया तो हम पॉइंट ए से पॉइंट भी आगे बढ़े, थोड़ा तो हम आगे बढ़े. समझो उसने नहीं बताया तो हमारा पोजीशन ए से कहाँ बिगड़ा, ए पे तो है ही, हम है ही है. अगर उसने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, सो गो टू द नेक्स्ट पर्सन, आस्क समबडी एल्स. अगर उसने भी नहीं बताया तो तीसरे के पास जाओ, उसने भी नहीं बताया तो चौथे के पास जाओ. कोई ना कोई तो होगा जो बता देगा. और अगर वो बता देगा तो आपका क्या पोजीशन होगा, पॉइंट ए से पॉइंट भी आप जाओगे, यू विल मूव फॉरवर्ड. सो आस्किंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस. या If we don't ask, that means we have to reinvent the wheel. पूरा कहानी हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम किसी को पूछते हैं, and by the way, ध्यान से सुनिए एक बात, हाईली सक्सेसफुल पीपल हैव नो हेजिटेशन इन शेयरिंग, क्योंकि उनको जो लेवल का सक्सेस चाहिए था वो तो ऑलरेडी मिल गया है, तो वो किसी को क्यों ना बताए. इनफैक्ट दे आर सो हाईली मोटिवेटेड टू मेक अदर पीपल सक्सेसफुल. तो जेन्युइनली जो कामयाब लोग हैं वो कभी हेजिटेट नहीं करते, वो हमेशा अपने सक्सेस स्टोरीज को बताते हैं, बल्कि वो खुश होते हैं अपनी स्टोरी को बताने के लिए, क्योंकि दे वांट टू शेयर विद अदर्स एंड आल्सो मेक अदर पीपल सक्सेसफुल. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू आस्क पीपल. आप अपने रिश्तेदारों में भी देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं. उनको पता होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं. जैसे कि अगर आपको अपने बच्चे को स्कूल में डालना है तो आप बहुत मेहनत करते हैं, हमेशा ढूंढते हैं कौन सी स्कूल अच्छी है, किस में डालेंगे तो बच्चे को सबसे फ़ायदा होगा. तो उस रिलेटिव को पता है कि यू आर वेरी मेटिकुलस इन फाइंडिंग थिंग्स. ओके, तो वो क्या करेंगे पता है, आपको सिर्फ एक फ़ोन करेंगे और बोलेंगे आपने अपने बच्चे को कौन से स्कूल में डाला. और आप बता दोगे और उसका काम हो गया. You will see some people in your life who are very smart, who will call up those people who are really meticulous. There's nothing wrong in asking, by the way. If you ask, if you do give and take, if you're asking and you're also giving, there's nothing wrong in that, okay? And there's nothing wrong in asking and moving forward in life. So ask is one of the biggest principles of success, which Jack Canfield says is so amazing. That if you just follow the principle, you can cut short your cycle times. जो आपको टाइम लगता है वो फटाफट कट करके आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हो.
जो चीज ऑलरेडी किसी ने किया है वो फिर से क्यों करना है, सो यू कैन ऑलवेज डू दैट एंड क्रिएट मोर सक्सेस इन योर लाइफ. ओके, so great. Today we covered 2 principles of success. इसी तरह I will cover lots of more principles every day. So just to recap, today we covered the first principle is looking for goodness in every situation. हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढो. इसी तरह हर इंसान में भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढो. Okay. And the second principle of success that we learned today was ask. पूछना सीखो. And please read this book called The Aladdin Factor, where Jack teaches every single how to ask, right? I'll give you another simple example. Suppose आप फ्लाइट में जा रहे हो और आपकी टिकट है इकोनॉमी क्लास में और आप देखते हो कि बिजनेस क्लास पूरा खाली पड़ा है, तो आप अपनी सीट पे तो जाके बैठ जाते हो, लेकिन जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है तो आप एयर होस्टेस को पूछ सकते हो कि कैन यू प्लीज अपग्रेड मी टू द बिजनेस क्लास. बिजनेस क्लास वैसे भी खाली पड़ा है. देखो, टेक ऑफ के बाद में पूछना. टेक ऑफ के पहले पूछोगे तो वो लोग चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा. ओके, तो टेक ऑफ के बाद में अगर पूछा और उसने हाँ बोल दिया तो आपका काम बन गया, और हाँ नहीं बोला तो कहाँ प्रॉब्लम है. हमारी इकोनॉमी में तो सीट है ही ना. तो आवर सीट इज ऑलरेडी देयर, सो नॉट टू वरी. यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग आउट ऑफ इट, राइट? So we'll cover more principles of success as we move forward, and I hope you found these principles useful. Anybody has some suggestions? Did you find these principles useful? Then I can share more principles as we cover the sessions in the coming days. How did you find these principles? Did you find them useful? Shweta says, I did it long back, and it was a successful move. The Aladdin factor, how to move, yes, how to ask. Amit says, thank you so much for the words of wisdom. Everybody is waving their hands today. Ramesh ji says, great. Nishad says, great revision. Padma says, very useful. सो कल से पूछना शुरू करो जो चीज आप करना चाहते हो. यस, वेरी गुड. बाला सेज वेरी यूजफुल. जयश्री ऑल्सो सेज वेरी यूजफुल. यस सेज yes, everything is important in life. Very good, very good. Thank you for your suggestions and your feedback. Very good. तो अभी से अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो सबसे पहले क्या करिए, उस इंसान को ढूंढिए जो वो ऑलरेडी कर चुका है और जो सक्सेसफुली कर चुका है या कर चुकी है. उनको आप फ़ोन करो, उनके साथ में एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो, उनको लंच पे लेके जाओ और वहाँ पे बैठ के शांति से पूछो, आई एम रियली फैसिनेटेड बाय द अमाउंट ऑफ सक्सेस यू अचीव्ड इन योर लाइफ. Can you please share some of your tools, some of your techniques? What do you do to become so successful? आपने ऐसे क्या किया जिसके वजह से आप इतने सक्सेसफुल हो गए? And trust me, people will be very happy to share these principles of success, okay? So please implement these successes and you will see that you will be able to take yourself to a new level, okay? So it's time for meditation. It's exactly 10 o'clock and we're going to do a meditation today. And today I intend to take you very, very deep. Okay, so be prepared for a very deep meditation. Today the connection also seems to be good. We have almost about 225 people online at this point. So I'm sure there are a lot of people sitting along with them. So I'm expecting that about 400 people are sitting right now. Let's create a vibration of a very high vibration today of almost 16,000, okay? So I'm going to take you deep into relaxation and meditation today. So everybody, sit in the relaxation position. Make sure your back is well rested. Spine is straight. Hands and legs are not crossed. The reason we are asking you not to cross your legs is because when you cross your legs, you short circuit the energy system. So we don't want to short circuit the energy system, okay? Make sure your hands and legs are not crossed. Put your hands on your laps like this, or you can put it in a mudra form, the Dhyan Mudra, and put it facing upwards towards the sky. And gently close your eyes.
and start taking deep, long breaths. लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करें. Take nice, deep, long breaths. And the amount of time that you take for breathing in, take the exact same amount of time for breathing out. Breathe in fully and breathe out fully. And while you are doing this, keep all your attention focused on your breathing. अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर रखें. सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है. The best way to pay attention to your breathing is to pay attention to your nostril, one of your nostrils, so that you can actually feel the warmth of the air going in and coming out. Going in and coming out. With every inhale, take in love, joy, peace and serenity. And with every exhale, let go of all the tension, all the worries, all the anxieties from your system. आपके सिस्टम में जो भी तनाव है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी चिंताएं है, वो सारी चीज़ों को एक्सेल कर दीजिए. Keep all your attention focused on your breathing. अगर मन इधर उधर भटक जाता है तो आपको फिर से अपने मन को अपने नाक के ऊपर लेके आना है, ताकि आपका पूरा ध्यान रहे आपके सांसों के ऊपर. Take a deep breath and while exhaling, relax both your hands and your legs completely. Just let them go loose. Just let them go completely loose. रबर की तरह एकदम ढीला छोड़ दीजिए अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को. Relax all the bones, all the muscles, all the tissues, all the cells of your hands and your legs completely. Just let them go loose. Both your hands and your legs are now completely relaxed. Relax, relax, relax. Keep all your attention focused on your breathing. Feel the air going in and coming out. Going in and coming out. Take a deep breath and while exhaling, relax your abdomen area. अपने स्टमक के एरिया को रिलैक्स कर दीजिए. रिलैक्स योर चेस्ट एरिया. अपने सीने के एरिया को रिलैक्स कर दीजिए. रिलैक्स योर लोअर बैक, मिडल बैक एंड योर अपर बैक completely. Just let them go loose. Relax all the organs. अपने सारे organs के ऊपर ध्यान दे के बोलो relax. Relax all the bones, all the muscles, all the tissues and all the cells of your abdomen area, chest area and your entire back completely. Just let them go loose. पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए. Keep all your attention focused on your breathing. Feel the air going in and coming out. Going in and coming out. Take a deep breath and while exhaling,
रिलैक्स योर शोल्डर मसल्स, कंधे के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए. रिलैक्स योर नेक मसल्स, गर्दन के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए. एंड रिलैक्स ऑल द मसल्स ऑफ योर फेस कंप्लीटली. जस्ट लेट देम गो लूज. आपके चेहरे के सारे मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए. रिलैक्स योर चिन, your cheeks, relax the tongue, your teeth, relax the lips, relax your nose, your ears, relax your eyes, your forehead, and relax all the muscles on top of your head completely. Just let them go loose. Your entire face is now completely relaxed. Your entire body, right from the bottom of your feet, going all the way to the top of your head, is now completely relaxed. Relax. Relax, relax. Now that your body is relaxed, we will now proceed to relax the mind. हम अपने मन को रिलैक्स करेंगे. To relax the mind, visualize that you're standing on top of a beautiful staircase. A staircase that has 20 steps going downwards. विजुलाइज करिए कि आप एक ब्यूटीफुल स्टेयरकेस के ऊपर खड़े हो और उसके 20 स्टेप्स है जो नीचे की ओर जा रहे हैं. यू आर इजीली एबल टू सी द 20 स्टेप्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू गोइंग डाउनवर्ड्स. आई एम नाउ गोइंग टू काउंट डाउन फ्रॉम 20 to 1, and as I count down from 20 to 1, with each count you will take one step downwards. And as you take a step downwards, you will go deeper and deeper and deeper into your subconscious mind. And with every step, you will go 1,000 times deeper into your subconscious mind. So starting with 20, start going down the staircase. धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करिए. 19, 18, 17, 16, 15, 14, going deeper and deeper. 13. With every step, you're going 1,000 times deeper into your subconscious mind. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. You're now standing at the bottom of the staircase, standing deep down in your subconscious mind. अब आप सीढ़ी के नीचे तक पहुंच चुके हो और आप अपने अर्ध जागृत मन की सबसे गहरी अवस्था में पहुंच चुके हो. And as soon as you see yourself at the bottom of the staircase, you see a beautiful corridor in front of you, and at the end of the corridor you see a beautiful door. आपके सामने एक बहुत ही सुंदर पैसेज है और पैसेज की दूसरी ओर एक बहुत ही सुंदर दरवाज़ा है. तो आप धीरे धीरे पैसेज पे चलते चलते उस दरवाजे की ओर जा रहे हो. Slowly walking towards the door. अब आप दरवाजे तक पहुंच चुके हो. दरवाजे का हैंडल आपको दिख रहा है, तो एक हाथ उठा करके आप हैंडल को हाथ में लेते हो, उसको घुमाते हो. यू टर्निंग इट अराउंड एंड द डोर ओपन्स. यू पुल द डोर टुवर्ड्स यू एंड द डोर ओपन्स.
And you now step out of the door. And as soon as you step out of the door, you find yourself in one of the most beautiful places on planet Earth. आप अपने आप को एक बहुत ही सुंदर जगह में पाते हो. ये एक ऐसी जगह है जो आपको बहुत ही पसंद है. हो सकता है ये जगह आपने पहले देखी हो या आगे फ्यूचर में देखना चाहते हो. लेकिन अब महसूस करिए कि आप उस सुंदर जगह में पहुंच चुके हो. And you can actually feel the place. You can completely feel the place. It could be a beautiful garden, a hill station, could be a beach or a forest, or any place that you truly love. And as you find yourself in this beautiful place, your mind becomes more and more peaceful. You can feel, you can hear the waterfall, you can hear the birds chirping in the sky, you can feel the warmth of the sunlight, you can smell the fragrances of the flowers around you. And as you experience the beautiful place, your mind becomes more and more relaxed. You are now in the deep alpha state of mind. The alpha state of mind is a highly beneficial state of mind, a state of mind where you are connected to the infinite intelligence that exists within you. You're connected to your subconscious mind. Whatever you visualize and affirm in this state of mind comes to physical reality in your life. So now notice that you are in that beautiful place. आप उस सुंदर जगह में पहुंच चुके हो. You can see your own God standing there. Visualize your own God standing there. And as soon as you see him, you are very happy. And you want to express your deepest gratitude to God for everything that's already there in your life. So you're saying thank you to God, thank you God for giving me one more day to make a difference to my family and to the world at large. Thank you कि तूने आज का दिन मुझे दिया तो मैंने कुछ न कुछ मेरे परिवार में या मेरे आसपास के लोग में कोई ना कोई परिवर्तन मैं ला सका हूँ. Thank you God for my healthy body, very fit and healthy body, my amazing powerful mind, जिससे कि मैं अपने पर्पस को जी पा रहा हूँ. I'm able to do all my work through my body using my mind. So I'm very grateful for the same. Thank you God for all the people in my life, starting with my parents who brought me to this world. Thank you to all my gurus and my teachers who have made me who I am today. Sincerely grateful to all my teachers and gurus. And deeply grateful to all my family members, starting with my spouse, who's always been with me through the thick and thin of life. My children, who add so much meaning to my life. And all my extended family members who are there in my life, always there to love and support me through the journey of my life. Thank you God for all the abundance in my life, starting with the home that I live in, the car that I drive, the office that I work in, the food, the air, the water that I drink, the clean air that I'm able to breathe, for the food that I eat. Thank you, thank you, thank you so much for all of these things. Thank you to the sun who's always serving us with light and life, to the moon who's so beautiful,
to the trees, the animals, the flowers, the mountains, everything in nature which is available. Thank you, God, for everything. Thank you, thank you, thank you. Now, it is important to seek forgiveness from God, क्योंकि हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, it is only because of our past actions, past karmas. So we are seeking forgiveness from God, क्योंकि आज का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो भी कुछ तो है जो हम सब ने मिलके किया है. इट इज़ नॉट द डूइंग ऑफ वन पर्सन, इट इज़ द डूइंग ऑफ मल्टीपल पीपल, billions of people. That is what has created the current situation. So we are seeking forgiveness from God, that dear God, please forgive us for whatever we have done, for our past karmas, for our past actions. Please forgive us if we have hurt anybody, hurt Mother Nature, directly, indirectly, knowingly, unknowingly, in this life or my past life. If I have hurt anybody through my thoughts, words, or deeds, then please forgive me. And God is very gracious. You can see His mercy flowing through His hands, sending beautiful white divine light towards you. महसूस करिए कि beautiful white divine light is covering you fully and washing away all the karmas, all the actions that have created the current situation. Visualize that this beautiful white shining light from God is covering all your family members, cleaning up all the karmas, past karmas which are creating a problem today. And visualize that the same beautiful white shining light is now covering all the 7 billion people, 7+ billion people on the planet. And God's mercy, God's grace is extended to all the billions of people on the planet. See that this white light is washing away all the karmas, all the wrongdoings, all the mistakes we've made with Mother Nature. And this beautiful white shining light is now protecting the entire planet Earth. Visualize that there is a beautiful white shining light covering the entire planet Earth, and this is protecting the planet Earth from any challenges going forward and even today. So you're very thankful to God for His mercy, for His grace. Thank you, thank you, thank you so much, God. Wonderful. Now, we're going to appreciate all those people who are working day and night to make sure that our life is running. Right from the people working in the hospitals, the doctors, the nurses, the paramedical staff, been working day and night to serve those who are in need. All the people who are making sure that these institutions are running, right from the cleaners to the admin staff to all the people. And all the people who are serving us, making sure all the daily essentials are being supplied to us. The fruits, the vegetables, the grains. There are people working day and night to make this happen. We're truly grateful to each one of these people. Very, and we want to express our deepest appreciation and love and gratitude towards these people. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. And now we'll do a few affirmations. So first of all, when I say an affirmation, you repeat after me with complete faith. Remember, words spoken with faith come to reality. Words spoken without faith may not necessarily come real. So speak with your heart, speak with complete conviction and faith.
I am always safe and divinely protected. I am always safe and divinely protected. Visualize that there is always a beautiful protective layer around you, a beautiful white shining globe which is always around you, which is protecting you from anything from the outside world, anything which is harmful. My family is always safe and divinely protected. Now visualize all your family members, all your loved ones. महसूस करें कि उन सब के आसपास एक ब्यूटीफुल वाइट शाइनिंग लाइट है जो उनको कोई भी परेशानियों से, कोई भी मुश्किलों से बचाता है. The world is always safe and divinely protected, and all the people in this planet are always safe and divinely protected. तो विजुअलाइज करिए कि हर इंसान के आसपास एक ब्यूटीफुल शील्ड है जो उसको परेशानियों से, मुश्किलों से बचाता है, नेगेटिव वाइब्रेशन से बचाता है. And now let's also say that Mother Nature is always safe and divinely protected. तो विजुअलाइज करिए कि हमारा नेचर, कुदरत, उसमें जितने भी दूसरे जीव जंतु है, द एनिमल किंगडम, द प्लांट किंगडम, एवरीबडी इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड. Every cell in my body is vibrating with energy and health. Every cell in my body is vibrating with energy and health. विजुलाइज करिए कि आपके बॉडी का हर सेल इज वाइब्रेटिंग विथ एनर्जी एंड हेल्थ. आई एम काम एंड पीसफुल इन एवरी सिचुएशन. रिपीट करिए, आई एम काम एंड पीसफुल इन एवरी सिचुएशन. I radiate love and happiness. Repeat करिए, I radiate love and happiness. My body is a very powerful tool and it can naturally heal itself. My body is a powerful tool that I use every day and it can naturally heal itself. The healing is constantly going on. Wonderful. Now we'll do a visualization where we'll visualize that the world has come back to normal. तो विजुलाइज करिए कि आप अभी अभी उठे हो, you're in the bed, just woken up, feeling fresh, feeling nice, feeling positive, and you see the sun has already risen. और आपके दरवाजे की बेल बजी and you're wondering who's there at the door. कितने दिनों से घंटी बजी नहीं है. तो आप अपने दरवाजे पे जाते हो, दरवाजे खोलते हो, and you see the newspaper वाला. You're delighted to see him after so many days. Take the newspaper in your hand. The newspaper wala is also very happy. As soon as you open the newspaper, you see the headlines which is saying, finally the world is now back to normal. Coronavirus is completely gone. Visualize this headline very clearly, crisp. You can see the letters very clearly on the newspaper as a big headline. And looking at this headline, you are so happy, jumping with joy. Wow, our world is now back to normal. Thank you so much, God, for bringing our world back to normal, bringing planet Earth back to normal. Thank you so much. आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स को खुशी खुशी बताते हो, वो भी एकदम झूम उठते हैं, नाच उठते हैं. एंड यू कैन सी दैट द एंटायर सोसाइटी, आपके सोसाइटी में सबको पता चल गया, तो सब लोग बेल्स बजा रहे, विसल्स बजा रहे, जोर जोर से अपने थाली को बैंग कर रहे, थालियों को बैंग कर रहे. यू कैन सी सो मच हैप्पीनेस, सो मच जॉय इन द एयर.
Finally, the world is back to normal. और जैसे आप खिड़की के बाहर देखते हो, you see, look out of the window, you see there's that whole buzz is there once again. Lots of cars on the street. Everybody going towards their offices. You are also very excited today, going to office after so many days. अभी ऐसे लगता है कि पहले कभी कभी ऑफिस जाने का कंटाला करता था, लेकिन अब मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि टुडे आई गेट टू गो टू द ऑफिस वंस अगेन. And you see your children are also getting ready for going to school or college or their own jobs, wherever they have to go. Everybody in the house is excited, joyful, leaving the house happily in the morning. और आपको बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते हैं, बिल्डिंग में मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं. And you see there's such an amazing smile on everybody's face. सब लोग इतने खुश हैं, क्योंकि फाइनली ये प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्रॉब्लम विच वॉज एट अ ग्लोबल लेवल, हैज नाउ एंडेड. एंड यू सी दैट भले ही इतना ट्रैफिक है, भले सब कुछ है, लेकिन फिर भी हवा में एक अलग तरह का वाइब्रेशन है. यू कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ लव, ऑफ जॉय, ऑफ पीस, ऑफ हार्मनी, ऑफ कंपैशन, ऑफ हेल्पिंग वन अनदर. आप देख रहे हो कि द वर्ल्ड has emerged to be a much more beautiful place than what it was earlier, where we are compassionate not only to our fellow human beings, but all the other living beings on the planet. And we are very considerate, very compassionate to all the living beings on the planet. And we are very respectful of Mother Nature. So you're looking up in the sky and you're shouting at God, declaring loudly, "Thank you so much, God, for bringing our world back to normal. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you." And you're experiencing a deep sense of gratitude that it is only God who controls our life. He has given us powers to live the life that we want. But nothing can ever move without His wish. Not even a leaf can move without His wish. So you're utterly thankful and grateful to God for His kindness, for His grace. Thank you, thank you, thank you. Now we will come back out of the meditation. तो फिर से अपने आप को सुंदर जगह में महसूस करिए जहाँ पे आप पहुँच गए थे. वहाँ से आप धीरे धीरे चलते चलते उस दरवाजे की ओर आइए जहाँ से आप इस सुंदर जगह में आए थे. Start walking towards that door. You can see the door now. It's right there in front of you. You hold the handle, pull the door and the door opens और आप अंदर जाते हो. और जैसे आप अंदर जाते हो फिर से आपको पैसेज दिखता है और पैसेज की दूसरी ओर वो सीढ़ी दिखती है. यू कैन सी दैट ब्यूटिफुल स्टेयरकेस विच हैज 20 स्टेप्स गोइंग अपवर्ड्स. तो धीरे धीरे आप उस पैसेज पे चलते चलते उस स्टेयरकेस की ओर जा रहे हो. अब आप स्टेयरकेस तक पहुंच चुके हो. यू कैन सी द स्टेयरकेस हैज 20 स्टेप्स गोइंग अपवर्ड्स. I'm now going to count up from 1 to 20, and as I count up from 1 to 20, you will slowly come out of the deepest levels of your subconscious mind. And at the count of 20, when you open your eyes, you're deeply relaxed, feeling calm, feeling peaceful, feeling absolutely wonderful, and ready to go to sleep. 1, 2, 3, slowly coming out, 4, 5, 6, coming out slowly, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. At the count of 20, when you open your eyes, you will be completely peaceful, deeply relaxed, calm,
feeling happy, joyful, and just ready to go to sleep. 14, 15, 16, 17, 18, 19. You may now rub your palms together. Please rub your palms together. Put them on your eyes. Feel the warmth of your palms on your eyes. And 20. You may slowly take your hands off your eyes. And whenever you're ready, you may slowly and gently open your eyes. And as you open your eyes, you're feeling calm, peaceful, deeply relaxed, feeling joyful, happy, and ready to go to sleep and have a nice, beautiful sleep like a little baby. Wonderful. All of you have been so amazing. Thank you so much for being here for 1 hour. It's a little over 1 hour today. So how is everybody feeling? कैसा लग रहा है? I hope everybody is deeply relaxed, calm, peaceful. कैसा लग रहा है? I just wait for a few people to respond. Girish says, feeling very happy. Thank you, sir. Thank you, Girish. Nishad says, how did we go so deep today, sir? It is because I gave an affirmation in the very beginning. Rameshji says, as always, calm and peaceful. Manga says, very pleasant feeling. Jayashri says, surreal. Pradeep says, relaxed. Jigna says, very peaceful. Amit says, superb, almost like a rebirth. Krishna says, thank you so much. Awesome. Rahul says, awesome. Rajni says, ever grateful to you. Manoj says, thank you so much. Deepak says, wonderful. Ujjwala says, deeply relaxed. Sneh says, thank you so much. Sunita says, thank you so much. Himmatji says, thank you very much. Bhushan says, feeling peaceful. Very good. Thank you so much, guys. I would like all of you to make one promise, is to spread this to at least 5 people. Spread this goodness to at least 5 people. सारे वीडियोस पिछले 8 दिनों के वीडियोस जो है वो फेसबुक पेज के ऊपर है. Please share these videos with all your friends. And as you are feeling so, let rest of the people on this planet also feel. तो जितना लोग हो सके उनको वीडियोस भेजिए, उसके लिंक्स भेजिए, meditations मैंने रखे उसको भी भेजिए, so that people get some tools and techniques. देखिए, people need tools, they need techniques, they need strategies to deal with this situation. तो अगर हमें अच्छा मिलता है तो don't stop the transformation with yourself. Please share it with other people. जितने लोगों तक पहुँचेगा उतना ज़्यादा होगा. Okay? And also leave a little note on what did you learn today. और इसको आप कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करोगे. Okay, you can just leave a little note there on the Facebook page of what did you learn today and how are you going to apply this in your life. Okay? Just to recap, we learned 2 principles of success. I'm not going to name them now. I want to hear from you, okay? So I'm going to give you some time to type it out. And thank you so much, Dhaval, Mona ji. Thank you for being here. Padma ji says, already sharing, sir. Very good. I know all of you invited so many friends, and that is why we've had such a large gathering today. And my goal is that on the last day we should have 1,000 people watching the last day. Let's hope. Let's see how to do that. Ramesh says, we'll do more of ask. Very good, Ramesh. Keep asking. Okay.
Tanmay says, find good in every situation, and I'm going to ask. I'm going to see goodness in every situation. Very good. Amol says, I'm already sharing. Thank you so much, guys. Please share. And also, I've put a post of the workshop that we're going to conduct from 9th to 12th of April. The post is there on our Facebook page. So please share the post with maximum people. This is the best opportunity for you to attend the workshop sitting at home. बहुत सारे लोग माइंड पावर वर्कशॉप करना चाहते हैं. अभी तक हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है, लेकिन ये मौका घर पे बैठ के इसको सीखना बहुत रेयरली मिलता है. तो प्लीज़ टेक दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. जिन्होंने इस वर्कशॉप को ऑलरेडी अटेंड किया है वो फिर से रिपीट कर सकते हैं, सो दैट वील हैव अ लार्ज ग्रुप, शेयर विथ वन अनदर. I will be inviting a lot of successful people also to share with us, because online है तो I will ask some of my highly successful contacts to come on the sessions and share their success stories, जो generally live workshops में हम नहीं कर पाते. लेकिन यहाँ पे हम invite करेंगे, ज़रूर invite करेंगे. We're going to invite some really highly successful people to come and share their stories. Yeah, so let's see if possible. I will invite some of my gurus also. Yeah. Thank you so much, guys. Thank you so much. Wish you all the best. God bless you all. And I will let you go to sleep now. Thank you so much. God bless you. Bye-bye. All the best. Bye-bye. Love you all. Thank you.